Assalamu alaikum and welcome back to the channel Productive Folks. एक बुक है and if you get a chance इसको ज़रूर पढ़िएगा. इसका नाम है The Compund Effect by Darren Hardy, जिसके अकॉर्डिंग हमारे हर सक्सेस एंड फेलियर दोनों में कंपाउंड इफेक्ट थ्रू आउट अप्लाई होता है. Step by step, day by day, your choices will shape your actions until they become habits, where practice makes them permanent. Compound effect is a journey of a seed to a tree. Let me explain. For instance, अल्लाह ना करे, अगर किसी को हार्ट अटैक भी होता है तो वो compound effect होता है. Because the amount of junk food, the amount of bad addictions as smoking, drugs, etc. that you already put in your body compounds together to get you in a hospital. On the other hand, if there is Elon Musk flaunting his wealth, buying Twitter for $44 billion, is again a compounding effect of his PayPal grindings, his Tesla grinding, and his SpaceX grindings. Remember from back in the day? So it's all about the process, the grinding that it takes, the time that it takes, the dedication that it takes. बनते बनते बनता है and then eventually आपको reward मिलता है. So you really need to be vigilant about the choices that you make in your daily routine life. Now quoting Javed Chaudhary, the columnist here, मेहनत करने वाले के पैर चूटी की तरह होते हैं, लेकिन जब वो अंजाम तक पहुंचता है तो उसके पैर हाथी की तरह हो चुके होते हैं. हमारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें कभी कभी मरवा देती है एंड ड्यू टू विच हम जल्दी क्विट कर देते हैं और गिव अप कर देते हैं. जब भी आप किसी टास्क, किसी गेम या किसी जर्नी को क्विट करने का सोचते हैं, प्लीज़ एक बार अपने माइंड से तमाम एक्स्ट्रा थॉट्स को निकाल कर सिर्फ ये सोचिए दैट इज़ इट इवन वर्थ क्विटिंग. कि आप जो टास्क गिव अप कर रहे हैं उसके एंड रिजल्ट में आपको ज़्यादा नुकसान है या कम नुकसान है. आपकी लाइफ, आपकी प्रायोरिटीज़, इमोशंस उससे कितने सिवियरली हर्ट हो सकते हैं. अगर कम कैटास्ट्रॉफी है then you can think of doing so. But अगर कैटास्ट्रॉफी ज़्यादा है तो eliminate that thought of quitting right then and there and keep doing what you're doing. So that with that one thought, अगर आपको अपने ही भले के लिए अपने ऊपर अगर fear of losing तारी भी करना पड़ता है तो क्या मसला है. Because eventually इससे आपकी ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस, आपके वो बॉक्सेस जो चेक नहीं हुए थे वो चेक हो सकते हैं. Now be it GPA in university, be it tasks that were given to you by your boss, be it your own aspirations. वो कहते हैं ना कि sometimes the hardest step is to take the first one. So शुरू कीजिए, because अल्लाह ताला भी तब तक एक इंसान की मदद नहीं करेगा जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करेगा. So begin to take initiatives that will be more productive for you in a longer run. Be the guy that everyone wants to follow in your own group, family, and around your associates. And I can tell you that from my own legit experience that you, my friend, will shine, inshallah. So take care of yourself. And again, try taking initiatives, because वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में कंपाउंड इफेक्ट के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इट रियली हेल्प्स अस बूस्ट आवर मोटिवेशन. एंड या, स्टे प्रोडक्टिव.